আপুনি অৰুণাচললৈ কাম কৰিবলৈ আহিছে নে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আহিছে? आप लोग यहाँ में जो एजेंडा है हर किसी को पता है। यहाँ में अभी बहुत लोग आप लोग हम लोग ट्राइबल लड़की को भी शादी कर लिया ना, बहुत लोग मुसलमान ने शादी भी कर लिया। अभी कल को बच्चा होगा वो लोग का, वो बच्चा लोग फिर अपना मामा बन जाए उनके आएगा। हम আপোনালোকৰ ঠাইলৈ গৈ গাহৰি খাব বিচাৰিলে খাবলৈ দিবনে? অবৈধ বাংলাদেশী এতিয়া কেৱল অসমৰে ইছ্যু হৈ থকা নাই, চুবুৰীয়া অৰুণাচল প্ৰদেশলৈও ই কঢ়িয়াই আনিছে ভয়ংকৰ ভাবুকি। 2011 চনৰ লোকপিয়লৰ তথ্য মতে মুঠ জনসংখ্যাৰ মাত্ৰ 1.95% ইছলাম ধৰ্মীয় লোক থকা অৰুণাচলত কিছু বছৰ ধৰি উদ্বেগজনকভাৱে বাঢ়িছে মুছলমান লোকৰ সংখ্যা। अभी हम लोग रेडी है फाइट करने के लिए। गवर्नमेंट को रुकता गया तारीख पे तारीख रिजल्ट जीरो आ रहा है। এজন দুজনকৈ আহি ঠায়ে ঠায়ে গাঁও পাতিছে, অবৈধভাৱে মছজিদ নিৰ্মাণ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে, আনকি অৰুণাচলী যুৱতীক বিয়া কৰোৱা, ইছলামলৈ কনভাৰ্ট কৰোৱা আদি বিভিন্ন অভিযোগ। প্ৰায় এমাহ ধৰি অশান্ত হৈ আছে আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যখন। আৰু ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ হৈছে সন্দেহজনক লোকৰ আগ্ৰাসন। এটা মছজিদত প্ৰৱেশ কৰি এইসকল লোকক অৰুণাচলৰ কেইজনমান স্থানীয় যুৱকে প্ৰশ্ন কৰিছে, আপুনি অৰুণাচললৈ কাম কৰিবলৈ আহিছে নে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আহিছে? আপোনালোকৰ ঠাইলৈ গৈ গাহৰি খাব বিচাৰিলে খাবলৈ দিবনে? ইমান ডাঙৰ মছজিদ যে নিৰ্মাণ কৰিছে, আপোনালোকৰ ঠাইত আমাৰ উপাসনাৰ স্থলী নিৰ্মাণ কৰিব বিচাৰিলে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ দিবনে? নিশ্চয় নিদিয়ে। हाँ, आप लोग ऐसा हम लोग बनेगा, हम लोग गावरी खाएगा, खाने देगा हम लोग को? नहीं देगा ना। आप लोग यहाँ पे इतना आराम से बेच रहे हैं, सबसे ज्यादा बदमाशी से आप लोग आदमी लोग करते हैं। इसके लिए एक सिस्टम होता है, एक नियम होता है, उस नियम के अनुसार जो है हम लोग यहाँ पे चर्च लोग भी इतना बड़ा नहीं है। हम लोग प्रेयर करना अलग बात है ना। देखिए लॉजिकल जब बात करते हैं ना, हम लोग यहाँ हम लोग आदमी जहाँ में हम लोग पूजा करने जाते हैं वो जगह इतना बड़ा, आप लोग बाहर से आके आप लोग जो आप लोग क्यों इतना बड़ा अपना स्ट्रक्चर करा करेंगे? শুনিবলৈ সাধাৰণ যেন লাগিলেও এই কথাষাৰো আছে ব্যাপক তাৎপৰ্য। অৰুণাচলত এতিয়া হালাল নকৰা মাংস পাবলৈ নোপোৱা হৈছে। গতিকে এইসকল ইণ্ডিজিনিয়াছ লোকে এইসকল লোকক প্ৰশ্ন কৰিছে, আমাৰ ঠাইত আমি বিচৰা মাংস কিয় খাবলৈ নোপোৱা হলো? जितना हम लोग का मुस्लिम भाई लोग, आप लोग भी सुनो, अभी हम लोग का प्रॉब्लम धीरे धीरे शुरू क्यों हो रहा है? गांधी मार्केट में जाओ, गंगा में जाओ, अभी हम बोलेंगे हमको हलाल वाला मुर्गी नीचे नहीं मिलता है। आप लोग बिना हलाल का खाएगा? बोलो तो जितना है। अभी हम लोग जहाँ अपना जगह में बैठ के हम लोग को अपना हिसाब का मीट खाने नहीं मिल रहा है। नो अने रंकान के ये लोग का दुकान में जाओ ना, आप बोलो बिना यहाँ का गला कच्चे मीट दो, मुर्गी दो, बोले देगा आपको? देगा ही नहीं। अभी हम लोग का जगह में हम लोग बोलो के हिसाब से बेच देगा। অৰুণাচলত কিয় মুছলমানক টাৰ্গেট কৰা হৈছে? যদি মুছলমানক টাৰ্গেট কৰিছে, হিন্দুক কিয় টাৰ্গেট কৰা নাই? আন একাংশৰ আকৌ প্ৰশ্ন সেই ধৰণৰ। সেইদৰে অৰুণাচলত অতীজৰে পৰা বাস কৰি অহা মুছলমান লোকেও বিৰোধ কৰিছে ৰাজ্যখনত বাঢ়ি অহা সন্দেহজনক লোকৰ আগ্ৰাসন। बांग्लादेशी का बिल्कुल हम लोग खिलाफ है, चाहे मुस्लिम हो हिंदू हो जो भी हो, खास करके तो मुसलमान तो आना ही नहीं चाहिए। अरुणाचल का आदमी बहुत पीसफुल है, हम लोग को हमेशा साथ देता है। जो आपकी टीम हो या अंशु हो आपसु हो जो भी हो, जितना संगठन है सब पूरा साथ देता है। बाहर से जो ये बांग्लादेशी जो आया हुआ है वो लोग का खिलाफ हम लोग भी है सर। वो लोग को हम लोग भी चाहता है वो लोग यहाँ से भाग जाए। हम 94 से है, आप कितना साल से? 85 से है, 90 से है, बहुत सारे आदमी सर बहुत साल से है यहाँ। অৰুণাচলত ধৰ্মৰ হিচাপত 2001 চনৰ লোকপিয়লৰ তথ্য মতে খ্ৰীষ্টান আৰু হিন্দুৱে সৰ্বাধিক। মুঠ জনসংখ্যাৰ 30.3% খ্ৰীষ্টান, বিপৰীতে হিন্দুৰ সংখ্যা হৈছে 29%। সেইদৰে মুছলমান মাত্ৰ 1.95%। কিন্তু হঠাতে ঠায়ে ঠায়ে বাংলাদেশী আৰু ৰোহিংগীয়া মূলৰ একাংশ সন্দেহজনক লোকৰ আগ্ৰাসনে চিন্তা বঢ়াইছে ৰাজ্যখনৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ। অৰুণাচলৰ স্থানীয় যুৱতীক বিয়া পাতি বা ব্যৱসায় বাণিজ্য চলাই একাংশ লোকে ঠায়ে ঠায়ে গাঁও পতা পৰিলক্ষিত হৈছে। সেইদৰে বিবাহৰ জৰিয়তেই হওক বা অন্য কাৰণতেই হওক ৰাজ্যখনত ইছলাম ধৰ্মলৈ ধৰ্মান্তৰকৰণ চলি আছে বুলি অভিযোগ উঠিছে, যাক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যখনৰ খিলঞ্জীয়া। आप यहाँ में होटल काम करने नहीं आए, इस्लाम का प्रचार करने आए ना। आप कन्वर्ट करने आए? बात तो इसी सुन के लग रहा है। नहीं यार जब अब तो जोलांग में होटल काम करने आए, फिर वहाँ से ये मस्जिद में आ गया। मतलब आप लोग का एंट्री का भी तरीका है, यहाँ में आदमी लाने का भी मतलब आप लोग का प्रोसेस है ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं ऐसे प्रोसेस होगा। अभी ये आपका ये बताया, पहले ये होटल काम करने के लिए आया, फिर वहाँ से ये मस्जिद में आ गया। आप लोग यहाँ में जो एजेंडा है हर किसी को पता है। यहाँ में अभी बहुत लोग आप लोग हम लोग ट्राइबल लड़की को भी शादी कर लिया ना,
बहुत लोग मुसलमानों ने शादी भी कर लिया, अभी कल को बच्चा होगा वो लोग का, वो बच्चा लोग फिर अपना मामा बच्चा ढूंढ के आएगा, हम लोग का लोग अभी हम लोग का जिम्मेदारी पालेगा, अपना कपड़ा वेशभूषा बदल देगा, बोलचाल बदल देगा ना, कल्चर खत्म हो जाएगा, सब चीज खत्म हो जाएगा। तब आप लोग क्या बोले, तो आप लोग तो वाहवाही मनेगा ना, वाहवाही मनेगा कि नहीं मनेगा? अगर हम लोग यहाँ में अभी जितना हम लोग आए, हम लोग अगर इस्लाम कबूल कर लेगा तो आप लोग खुशी होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा बोले? होगा कि नहीं होगा, बस बताइए। প্ৰায় এমাহ পূৰ্বৰে পৰা সন্দেহজনক লোকৰ আগ্ৰাসনে উত্তাল কৰি তুলিছে অৰুণাচলৰ ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক পৰিৱেশ। এইসকল লোক ক'ৰ পৰা আহিছে? যদি তেওঁলোক ভাৰতীয় তেন্তে ঠিকেই আছে, যদি তেওঁলোক অবৈধ বিদেশী তেওঁলোকক কেতিয়া অৰুণাচলৰ পৰা খেদি পঠিওৱা হ'ব, এইবিলাক কথাক লৈ 8 ডিচেম্বৰত 12 ঘণ্টীয়া অৰুণাচল বন্ধৰ আহ্বান জনাই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ খিলঞ্জীয়া যুৱ সংগঠন, অৰুণাচল প্ৰদেশ ইণ্ডিজিনিয়াছ ইউথ অৰ্গেনাইজেশ্যন, ইণ্ডিজিনিয়াছ ইউথ ফ'ৰ্চ অফ অৰুণাচল প্ৰদেশ, অল নাহৰলগুন ইউথ অৰ্গেনাইজেশ্যন, এই আটাইবিলাক সংগঠনে 8 ঘণ্টীয়া অৰুণাচল প্ৰদেশ বন্ধৰ আহ্বান জনায়। যদিও এই বন্ধক প্ৰশাসনে ইলিগেল এণ্ড আনলফুল বুলি অভিহিত কৰিছে। यहाँ में हम लोग एक पॉइंट्स रखा था, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन ऑफ जामा मस्जिद एंड पंजाखाना, इसको हटाओ बोल के सरकार को, इलीगल को, लीगल को नहीं, इलीगल को। दूसरा है कि लीगल को हम नहीं बोल रहे, इलीगल इमिग्रेंट्स लोग बांग्लादेशी से हो, रोहिंग्या मुस्लिम से, इसको हटाओ। अगर आप लोग नहीं सक रहे तो हम लोग यहाँ से मेरा जो अभी जो प्रेसिडेंट अंशु का पंजा लेजेंड ने बोला, जैसे हम लोग को ऑर्डर दो तो ट्रक में घुसा के रखिएगा, हम लोग भी रेडी है अभी। जो इमिग्रेंट्स को बांग्लादेशी का हो या रोहिंग्या का हो, एवरी मुस्लिम को नहीं बोल रहा है, सिर्फ इलीगल को बोल रहा है। तीसरा है जो इन्फ्लक्स हो रहा है यहाँ में, एक डेली मार्केट का थ्रोस है, वीकली मार्केट का थ्रोस है, जो यहाँ में इन्फ्लक्स हो रहा है इमिग्रेंट्स लोग जो है, उसको हम लोग यहाँ से फेंको बोल रहा है। इसलिए उसको फेंकने के लिए एक सिंपल सा तरीका है, मार्केट को बंद करना है। और चौथा हम लोग का पॉइंट था, अगर जो लीगल में है मस्जिद उसको भेजने दीजिए, उसको हम लोग कुछ भी बात नहीं करेगा। जो इलीगल को गवर्नमेंट नहीं सक रहा है, इसलिए हम लोग गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रहा है, किस लिए नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग कंपेल हो गया मूवमेंट करने के लिए। সন্দেহজনক লোকৰ বহিষ্কাৰ, অবৈধ মছজিদ নিৰ্মাণ বন্ধ কৰা, পাঞ্জা নামাজৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ এই বন্ধৰ আহ্বান। সেইদৰে নাহৰলগুনৰ নিগম কলনীত নিৰ্মাণ কৰা অবৈধ জামা মছজিদ ভাঙি পেলোৱা, ইটানগৰৰ কেপিটেল ৰিজনত সাপ্তাহিক বজাৰ সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰা, ৰাজ্যখনৰ পৰা অবৈধ বাংলাদেশী আৰু ৰোহিংগীয়া মুছলমান বহিষ্কাৰ কৰা, এইবিলাক দাবীৰে বৰ্তমান সময়ত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সামাজিক পৰিৱেশ উত্তাল হৈ আছে। ইটানগৰ কেপিটেল ৰিজন বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে। ইতিমধ্যে এইসমূহ সংগঠনে যি অৰুণাচল প্ৰদেশত বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে, যিসমূহ দাবী উত্থাপন কৰিছে, সেই দাবীসমূহকো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চৰকাৰে সংগঠনকেইটাৰ বিষয়ববীয়াৰ সৈতে বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত বৈঠকত বহিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে। লগতে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে বন্ধই কেতিয়াও সলিউশ্যন আনিব নোৱাৰে। গতিকে তেওঁলোকে সমস্যা সমাধানৰ বাবে আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে কিদৰে অৰুণাচল প্ৰদেশক বিদেশী আগ্ৰাসনৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পৰা যায়, এই লৈ তেওঁলোকে কথা পাতিব বিচাৰিছে। আৰু এনে সময়তে ইতিমধ্যে অৰুণাচলত আৰম্ভ হৈছে যিসকলে অবৈধভাৱে অৰুণাচলত প্ৰৱেশ কৰিছে সেইসকল লোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। ইতিমধ্যে অৰুণাচল প্ৰদেশত ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটৰ জৰিয়তে যোৱা মঙলবাৰলৈকে তথ্য অনুসৰি প্ৰায় ৭,৩০০ অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰা লোকক বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে। গতিকে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, এইসকল লোক অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা আহি ক'ত যাব? অসমত সোমাব নেকি? বহুতে কৈছে অসমত যি উচ্ছেদ চলি আছে, এই উচ্ছেদৰ পৰা বাচিবলৈ একাংশ সন্দেহজনক লোকে অৰুণাচল প্ৰদেশত এতিয়া নিগাজিকৈ থাকিবলৈ লৈছে। আমি সকলোৱে জানো অসমৰ অৱস্থা এতিয়া কি হৈ গ'ল। একাংশ সন্দেহজনক লোকৰ আগ্ৰাসনে অসমৰ ইখনৰ পিছত সিখন জিলা গ্ৰাস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। নামনি আৰু মধ্য অসমৰ পাছত এতিয়া উত্তৰ অসম তথা উজনি অসমতো একাংশ সন্দেহজনক লোকৰ আগ্ৰাসন বাঢ়ি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এনে সময়তে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ যি আগ্ৰাসন চলিছে, চুবুৰীয়া ৰাজ্যখনৰ প্ৰতি চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে। কিন্তু এটা কথা অতি স্পষ্ট, যদি অৰুণাচলৰ পৰা অবৈধভাৱে বাস কৰা লোকসকলক খেদি পঠিওৱা হয়, তেন্তে তেওঁলোকে অসমত আহি বসবাস কৰিবলৈ ল'ব নেকি? এই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত অসম চৰকাৰেও কিন্তু চকু ৰখা উচিত। আজিৰ ভিডিঅ' ইমানতে সামৰিলোঁ। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত নতুন এক বিষয়বস্তুৰ সৈতে পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। চাই থাকিব ইউনিক ইনফৰটেইনমেণ্ট। ধন্যবাদ।